Hi, I hope you're all fine and good. My name is Sunaina. The ones who already know me, welcome back. और जिनकी ये पहली वीडियो है, I hope you guys benefit from whatever I'm going to teach today. अच्छा जी, so today's topic is, let's move. Algebraic fractions. According to CAIE, this is 2.3. Algebraic fractions and formula. रिसोर्स बुक हमारी NSM बुक 2 चैप्टर 6 है. अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्यों इतना मुश्किल है अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में? ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी मुश्किल लगती है? नॉर्मली जो रूल्स हम नॉर्मल फ्रैक्शंस के लिए यूज करते हैं कि जब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो रही है देन हमको डिनोमिनेटर सेम करना है, उसके बाद व्हाटएवर इज द ऑपरेशन वो परफॉर्म करना है, एंड अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन हो रही है तो इन दैट केस वी आइदर कैंसिल इफ पॉसिबल, अगर डिवीजन है तो उसको स्विच करना है. एंड दीज आर बेसिक रूल्स जो हमने फ्रैक्शंस में ऑलरेडी ग्रेड 4 के सिलेबस में सीख चुके होते हैं. अगर तो यू गाइज नो दोज तो मेरा नहीं ख्याल कि अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टॉपिक है. लेकिन हाँ, अगर उसमें थोड़ा सा भी लैकिंग है देन आई वुड सजेस्ट बिफोर ऑप्टिंग फॉर सॉल्विंग दीज, अपना थोड़ा सा रिफ्रेशर के लिए, रिव्यू के लिए थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लो ऑफ नॉर्मल फ्रैक्शंस विदाउट एनी अलजेब्रा. ऑलराइट, चलो जी, लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, अलजेब्रिक फ्रैक्शंस होते क्या हैं भाई? सबसे पहला बात, okay, algebraic fractions are fractions that contain at least one variable, which means x, y, a, b, c's or whatever. So the following algebraic expressions are examples of algebraic fractions. Let's see how. X is the numerator. In this case, if you see x over 12, where x is my numerator. Another case, an expression in terms of x is the denominator, either 3 over x plus 1 likha hua hai. Then it says the numerator is a multiple of x. क्योंकि 2 multiplied by x, which means 2x over 15 is my fraction. Then it says both the numerator and the denominator contain an x term. ऊपर x plus 1 है और नीचे 2x है. Both the numerator and the denominator contain an expression with x, 3x plus 4 and 2x minus 5. The numerator and the denominator are quadratic expressions. अब सबसे पहले तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि जी ये quadratic expression होती क्या है? Quadratic expression is where your variable, let's say x in this case, has a power of 2. जब तक वो पावर ऑफ 1 होती है तब तक हम उसको लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन कंसिडर करते हैं और कहते हैं. However, as soon as it has a power of 2, it's known to be a quadratic expression. Alright, let's move ahead. Working with algebraic fractions, remember, fractions can be expressions or equations. जब expressions होंगी, इन दोनों का major difference अगर भूल गए हो तो let me just let you know again. Expression is where you do not have an equals to. However, an equation is when you have an equals to in the middle. अच्छा जी, while working with expressions, we only add, subtract, multiply or divide. However, while working with equations, we simplify as well as find solutions of the variables. इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी variable होगा, a, b, c's, x, y, z's or whatever, so उन सबका कुछ ना कुछ इक्वल करके आंसर निकल रहा होगा, आंसर सॉल्व हो रहा होगा. ओके, बिगनिंग विथ हमारा पहला एग्जांपल ऑफ द डे. 2x cube bracket x plus y whole square, the entire thing divided by 63x y square x plus y power 4. अच्छा जी, मेरे इसको करने का तरीका होता है कि सबसे पहले ये जो 28 और 63 है ना, इनको सिंप्लीफाई करो. एज यू कैन सी ये दोनों टेबल ऑफ 7 से बड़ी आराम से सिंप्लीफाई होता है. तो 28 को आप बना लो अपना 7 into 4 is a 28 and 63 can easily become a 9. ठीक है, क्या हो गया? All right, so I'll just write my 4 over 9. ये तो मेरा पहला काम था.
उसके बाद मूविंग ऑन टू x का क्यूब है ऊपर और नीचे x की पावर जब कुछ नहीं है तो 1 है। तो ये जो x की पावर 1 होती है ना, इसको हम पूरे के पूरे x को कैंसिल कर देते हैं और इस 3 को हम 2 बना देते हैं। तो ये आ जाएगा x की पावर 2 लेफ्ट। ये क्यों किया? क्योंकि x की पावर 3 का मतलब था कि ऊपर 1, 2 एंड 3 3s थे और नीचे एक x था। तो 1x एंड 1x आर कैंसल्ड, तो बचे कितने x's? 2, वो मैंने ऊपर लिख दिया। उसके बाद यू कैन सी कि y स्क्वायर है लेकिन ऊपर y नहीं है, इसका मतलब है कि जी y स्क्वायर को अपनी जगह पर रहना है, इसका कुछ कर नहीं सकते। Then you see x plus y की पावर 2 and x plus y की पावर 4, which means कि ये जो x plus y है ऊपर पावर 2 का मतलब है कि ये 2 दफा लिखी हुई है। However, जब इसकी पावर 4 है तो इसका मतलब है कि ये सेम चीज 4 times लिखी हुई है। That is what I mean. So can I cancel one bracket with one bracket, another bracket with another bracket, and this means कि मेरे पास नीचे 2 brackets of x plus y remaining हैं with a power of 2. So this means ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, नीचे we'll have x plus y to the power 2. That's what I have. This was this easy. इसको step by step करोगे तो that will be as easy as you want. ठीक है ना? चलो let's move on to the next question. Alright, now my question is x square minus 3x over 3x minus 9. अच्छा, इस तरह के केसेस में ना कुछ कॉमन निकालना पड़ता है, क्योंकि जब बीच में माइनस है तो इसका मतलब है दिस एंटायर थिंग ऑन टॉप एंड दिस एंटायर थिंग डाउन इज अ टर्म, और टर्म के बीच में कैंसिलेशन नहीं होती है। प्लीज रिमेंबर दिस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव मिस्टेक्स दैट किड्स डू। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि मैं यहाँ पर इस 3x और इस 3x को काट नहीं सकती, ये गलत हो जाएगा। So please don't do that. चलो जी, ऊपर वाले केस में x square minus 3x, इन दोनों में x minus 3x, इसका मतलब है कि ये 1x और ये 1x कॉमन है। According to this rule, I can have the x out क्योंकि ये दोनों x से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने x को बाहर निकाला और पूरे के पूरे ये जो अंदर वाला x minus 3 रिमेनिंग है, इस पूरे को मल्टीप्लाई किया है इस x से। ठीक है, so basically this means I've taken out the common. X is the common in both of these, so I just pulled it out. नीचे वाले केस में 3x minus 9, इनमें से I can see that the 3 is a common because 3 multiplied by x will give me a 3x and 3 multiplied by 3 will give me a 9. So I can say under I have left x minus 3 again. Okay, do understand this step and only then move ahead. Now in this case, जब मेरे पास आ गया x bracket x minus 3 after taking out the commons and 3 bracket x minus 3. Now I can see कि x minus 3 और ये x minus 3 same है, दोनों आपस में multiply हो रहे हैं. Hence, I can cancel this entire bracket with this entire bracket and leave my answer as x over 3. This is my final answer. Algebraic expression पता नहीं क्यों इतना कंफ्यूजिंग लगता है, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं, इसको स्टेप बाय स्टेप करोगे बड़ा इजी है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, 8 square plus 7hk over 5hk. I would suggest again थोड़ा सा ट्राई करो, खुद से सॉल्व करो, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखो। पॉज द वीडियो फॉर अ व्हाइल। ऑलराइट, ऊपर वाला 8 स्क्वायर प्लस 7hk है, हाउएवर नीचे 5hk, तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके बीच में कैंसिलेशन तो हो सकती है लेकिन इनकी कैंसिलेशन ऊपर कहीं पे बीच में नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर एक टर्म है जो कि बीच में ऐड और सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है। तो अगेन इन दिस केस मैं ऊपर वाले में से न्यूमरेटर में से h को कॉमन निकाल देती हूँ, तो अंदर बचेगा 1h here प्लस 7 एंड अगर ये h जा चुका है बाहर तो I have a left over k here, तो ये मेरा रिमेनिंग है। The entire thing over 5h
k. Now this h outside can be cancelled with this h down, क्योंकि 5h k आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, does not make it difficult to cancel. However, जब add और subtract हो रहा होता है तब कैंसिलेशन नहीं होती है. प्लीज मत करना वरना आंसर गलत आएगा. Alright, so my answer left over in the numerator is h plus 7k. The entire thing over 5 and k is left, so 5k. अब कोई मुझे बोले कि जी ये k और ये k काट दो, तो नहीं, ये k और ये k नहीं कट सकता क्योंकि ये बाहर नहीं निकल रहा, ये कॉमन नहीं है. इट इज इन मिडल ऑफ अ टर्म, hence I cannot do that. देखो इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है, एमी बेचारे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को सबने बड़ा बदनाम किया हुआ है. Let's move ahead. Alright, so now you can see that we have AB over C square multiplied by 4C over 6A square B. Again, now it's not a term. A और B multiply हो रहे हैं, cancellation possible. C square, cancellation possible. 4 और C बीच में add और subtract नहीं है, मतलब multiply हो रहे हैं, cancellation possible. 6A square B, cancellation perfectly possible. थोड़ा सा इसको आराम से लिख लो. AB over C square multiplied by 4C over 6A square B. तो देखो ये एक B और एक ये एक B gone. फिर ये 1C और ये जो C की पावर 2 थी इसमें से 1C चला गया तो ये 2 भी चला गया, मतलब कि 1C रह गया. फिर ये एक A और ये जो नीचे A की पावर 2 मीन्स 2 A's थे, इसमें से भी एक A चला गया. Now I have left ऊपर एक 4 रह गया और नीचे C है, 6 है, A है. ठीक है, अब ये 4 और 6 है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकते हैं. 4 बन सकता है 2, 6 बन सकता है 3 with the table of 2. Now what do I have in this fraction left? 1 over C multiplied by 2 over 3A. ठीक है, as I cannot do anything more, तो मैं ऊपर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी. 1 multiplied by 2 is a 2. C multiplied by 3A becomes 3AC. That's it. इतना easy है. Let's move on. Okay. अच्छा जी, अब इसमें आ गया डिविजन का साइन. अगेन बेसिक रूल्स ऑफ फ्रैक्शन ने बोला था कि डिविजन तो कर ही नहीं सकते, डिविजन को हमेशा मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं. तो वो कैसे करते हैं? फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज कॉपी कर लो, ओवर x प्लस वाई एज इट इज लिख दो. ये डिवाइड जो है ये बनेगा मल्टीप्लाई का साइन एंड द फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट्स, which means the 5x plus 5y goes on top, dividing it by the 8. Now as you can see 4x is being subtracted, 16x plus y है, कहीं पे कोई cancellation possible नहीं है, hence common निकालो. 4x और 16 दोनों में से एक 4 common आ सकता है. What are you left with? You're left with x minus 4. जब ये कॉमन निकाल लिया करो ना तो जस्ट गो बैक एंड सी इफ यू आर गेटिंग द सेम आंसर व्हेन यू मल्टीप्लाई. Does 4 multiplied by x gives you a 4x? Yes, it does. Does 4 multiplied by 4 gives you a minus 16? Yes, it does. Hence इसका मतलब है कि सही कॉमन निकाले. Over x plus y क्योंकि कुछ कॉमन नहीं निकलता. Multiplied by 5 bracket, इन दोनों में से 5 बाहर आ सकता है, hence I took it out common. X plus y is my leftover inside, over 8. Now you can see that this x plus 5 here and x plus 5 here, एक numerator में एक denominator में cancel हो सकते हैं. And here we have a 4 1s are 4 and 4 2s are 8. Perfect. So now what am I left with? ऊपर है x minus 4 being multiplied by 5 और नीचे है 2. So I have 5 bracket x minus 4, the entire thing over 2. So your answer here is done. Ta-da! Alright, let's move on. अच्छा जी, अब तक हम मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शंस कर रहे थे. अब आ गया है बीच में फ्रैक्शन के एक एडिशन का साइन, which means कोई कैंसलेशन नहीं हो सकती,
कुछ भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या भाई? तो होगा ये कि अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। आई होप यू रिमेम्बर योर बेसिक फ्रैक्शन रूल्स। डिनोमिनेटर्स को सेम करना पड़ता है। Now 3a and 5a cannot be made same until and unless मैं 3a को multiply by 5 करूं और 5a को multiply by 3 कर दूं और दोनों को बना दूं 15a. That's the only possibility that I have. If you remember the rules of fraction, when you multiply the denominator with a 5, you have to multiply the numerator with a 5 as well. And when you are multiplying the denominator with a 3, you have to multiply the numerator with a 3 as well. Hence, you have 5 multiplied by 2, which is giving you a 10, plus 3 multiplied by 3, which is a 9. Hence, my final answer is 19 over 15a. इतनी सी बात थी, एवं कंफ्यूज हुए चले जा रहे थे। चलो जी, let's move on to the next question. All right, 3 over 2b minus 4c plus 2 over 3b minus 6c. अच्छा, इधर नजर आ रहा है कि ये b माइनस c दोनों थोड़ी थोड़ी सेम है, लेकिन कोफिशिएंट्स डिफरेंट है। So let's just try to first take out the coefficients common. 2b minus 4c में से I can have a 2 common and I'll be left with b minus 2c plus 2 over इन दोनों में से 3 बाहर आ सकता है और b minus 2c अंदर। Now if you see the denominator में b minus 2c और b minus 2c तो सेम है, 3 और 2 डिफरेंट है। तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करके मैं दोनों को 6 बना सकती हूँ। Whenever I'm multiplying this with 3, I have to multiply the numerator with the 3 as well. इसी तरह इधर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, 3 into 3 बना 9 डिवाइडेड बाय 2 into 3 6 b minus 2c plus 4 upon 6b minus 2c. As you can see, both my denominators now are same. 9 plus 4 अब हम कर सकते हैं, giving me a final answer of 9 plus 4, 10 and 13. So 13 divided by 6 bracket b plus 2c can be my final answer. I would suggest ponder on, थोड़ी सी देर solution को देखो and just understand all the steps that I've done. Steps carry marks और steps इसलिए marks carry करते हैं क्योंकि many a times आपके steps में कोई mistake नहीं होती है और कहीं पे एक किसी step में जाके एक slight सी mistake हो जाती है which gives you the answer wrong. अगर steps कर लोगे तो at least the teacher will know that you have known the concept. The teacher will know that you know what to do. However, just a slight little mistake made you to not achieve what was required. So make sure that you do these steps और steps करने से question बड़ा आसान हो जाता है. Please understand this as well. All right, let's move on. Another question. This is 2h minus 2k minus 3k over 2k minus h. अगर इधर नोटिस करो तो ये 2k नेगेटिव है और इधर 2k पॉजिटिव है, h नेगेटिव है और h पॉजिटिव है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साइन डिफरेंट है। In this case, what you do is you write the numerator as it is, you write this denominator as it is. However, इधर भी numerator same. इस denominator में से pull out a minus. When you pull out a minus, तो ये जो h है ये पॉजिटिव हो जाता है और ये जो 2k है ये नेगेटिव हो जाता है, दोनों के साइंस ऑपोजिट्स हो जाते हैं। Now your denominators are same, but this minus and this middle minus will make the question 2h plus 3k divided by h minus 2k. This is what your question becomes. However, as you can see कि दोनों में कुछ भी सेम नहीं निकल रहा, hence हम ना कुछ ऐड कर सकते हैं ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो just let it be. आगे कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में।
Let's move on to this question. 5y over y square minus 4 minus 2 over y minus 2. अच्छा जी, अब ये y minus 2 है और ये y square minus 4 है. In the first place, can your y square minus 4 also be written as y square minus 2 square? 4 का मतलब 2 square होता है. And if you remember your identity number 3, which says a square minus b square is equals to a plus b and a minus b. According to this rule, I can write y plus 2 and y minus 2, which means now my denominator is this. So let's write 5y over y plus 2 and y minus 2 minus 2 over y minus 2. अब ये देखो, ये y minus 2, ये y minus 2. ये जो y plus 2 है, ये इधर है, इधर नहीं है, missing है. So can we just simply multiply this entire thing with y plus 2? नीचे से multiply किया है तो obviously numerator में भी multiply होगा. Hence my answer now becomes 5y minus 2y plus 4 over y plus 2 and y minus 2. Answer बना 5y minus 2y is 3y plus 4 over y plus 2 and y minus 2. That is it. अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लग रही है तो प्लीज इस सॉल्यूशन को वापस पीछे जाओ और दोबारा से देख लो. आई एम सॉरी यार, बहुत टाइम हो गया. आई डोंट थिंक नाउ आई विल बी एबल टू मूव ऑन टू अ स्लोअर स्पीड ऑफ स्पीकिंग बिकॉज आदत हो गई है. ठीक है, ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा जी, ये क्वेश्चन है 3x अपॉन 4y माइनस 2z माइनस 2x अपॉन z माइनस 2y प्लस 5 अपॉन 3z माइनस 6y. ये वाला क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करूंगी. I'll just do it half क्योंकि I just have to explain you the concept. Okay. From this denominator, we can have a 2 outside. We can simply pull out a 2 and leave 2y minus z out inside. But if you see, here we have a z positive and a minus 2y, which means कि मुझे एक minus का 2 बाहर ले लेना चाहिए. If I do this, then I am so sorry. Let me just erase it and show you what it actually becomes. Okay, let me write. अगर मैं minus 2 बाहर pull करती हूँ, then inside I have a z minus 2y for the first one. For the second one, it's the same. However, for this one, I can again have a 3 outside and अंदर बचेगा z minus 2y. Now let me write all the fractions. 3x upon minus 2 bracket z minus 2y minus 2x over z minus 2y plus 5 over 3 bracket z minus 2y. Now z minus 2y, z minus 2y और z minus 2y the same है. However, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे minus 2 है. If I make all of them 6, तो मेरे denominator में आ सकता है 6 bracket z minus 2y और minus 2 को 6 बनाने का मतलब है multiply it with a minus 3. Right? Minus minus plus हो जाएगा 2 into 3. इसको करने का मतलब है multiply it by a 6 और इस 3 को multiply कर लो with a 2. When you are multiplying the denominator with certain numbers, ऊपर वालों को भी multiply करोगे. I hope you can solve the rest of the thing. 3x को minus 3 से multiply करो, you will get a minus 9x. Then a minus 2 into 6 is a 12, so minus 12x plus 5 into 2, 10, and so on. आगे का step बहुत easy है, so try doing it on your own. Alright, let's move on to the next question. अच्छा, अब ये है इक्वेशन टाइप क्वेश्चंस. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एक्सप्रेशंस
but not difficult again. The question says make x the subject. Subject का मतलब होता है जैसे इसके according आपका y is the subject, which means the entire thing is in terms of y. मतलब y is equals to this. जब वो कह रहा है x को सब्जेक्ट बनाओ तो इसका मतलब है कि वो चाह रहा है कि x is equals to something लिख लो. ठीक है, so let's see how do we do that. आप लिखोगे y equals 2 minus x over 3 plus 2x. So in the first step इसको वहां शिफ्ट करो और मल्टीप्लाई कर दो. So y multiplied by 3 plus 2x will be equals to 2 minus x. You have now 3y plus 2xy equals 2 minus x. In this case, leave your positive 2xy here क्योंकि हमें 2xy में से x को अभी अलग करना होगा. And shift your 3y on the other side, making it 2 minus x. Alright, so now you shift your minus x on the other side and make it 2xy plus x equals 2 minus 3y. Okay, इन दोनों में से you can have the x out, leaving 2y plus 1 inside equals 2 minus 3y. Now moving on, you can leave the x on this side क्योंकि हमें x equals के form में equation चाहिए. Your numerator is 2 minus 3y which remains on its place. अब ये जो 2y plus 1 था which was being multiplied by the x here, दूसरी साइड पे जाके divide हो जाएगा and 2y plus 1. So now your entire thing is in terms of x, which means x is the subject. Now it says hence calculate the value of x when y is a minus 2. ये तो बड़ा ही simple है. इसमें x equals, this is your part 2, x will be equals to 2 minus 3 और bracket में y की value लिख दो minus 2 divided by 2 bracket minus 2 again plus 1 equals 2, 3 into 2 is a 6, minus minus plus over 2 into 2 is a 4, a negative 4 plus 1, leaving your answer as 8 upon minus 3. Now your answer becomes x equals negative 2 whole 2 upon 3. ये 2 whole 2 upon 3 कैसे बना? मैंने 8 upon 3 को long division से change करके mixed number बनाया. Okay. All right. Let's move on to the next question, which is बड़ा easy सा question है. a minus 2 upon 5 plus a minus 1 upon 3. तो इस 5 को multiply by 3 कर लो, इस 3 को multiply by 5 कर लो और दोनों को 15 बना दो. Now when you're multiplying the denominator with the 3, numerator a minus 2 को भी 3 से multiply करना पड़ेगा. Plus 5 bracket a, I'm so sorry, मैंने a को x लिख दिया था. Sorry. So we have this a minus 1 equals 1. Now 3 into a gives me a 3a minus 6 plus 5a minus 5. The entire thing over 15 equals 1. 3a plus 5a, 8a minus 6 minus 5 minus 11 equals, the 15 was being divided here, goes on the other side और multiply हो जाएगा. 15 ones are 15. बचा क्या? 8a equals 15 plus 11. Hence a is equal to 26 over 8. दोनों को simplify कर लो. ये बनेगा 13, ये बनेगा 4. Now 13 over 4 can be changed into a mixed number, making it 2 whole 1 upon 2 nahi 3 whole, because 4 into 3 is a 12. So yeah, sorry, 3 whole 1 over 4. That is it. ज़्यादा तेज हो गई. Sorry. अगला वाला क्वेश्चन बड़ा ही आराम से करवाऊंगी. बस लास्ट क्वेश्चन है. Let's do it very slowly. ठीक है ना? पहले तो सिर्फ क्वेश्चन को 2 मिनट के लिए देख लो कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है या क्यों बोल रहा है.
3 over 2b plus 3 minus 5 over 3b minus 4. ना ही 2b plus 3 3b minus 4 बनेगा, ना ही vice versa. Hence in this case आप क्या करते हो कि denominator में दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हो. जैसे हमने पिछले वाले केस में 5 और 3 को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके 15 बना दिया था. When you're doing this, basically you're multiplying the 2b plus 3 with the other one. इसका मतलब है कि न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3b minus 4 से, और क्योंकि 3b minus 4 को आपने मल्टीप्लाई किया है the other fraction से, तो 5 को भी मल्टीप्लाई करोगे 2b plus 3 से. Now I have 3 into 3 9b minus 3 into 4 is a 12. फिर एक और माइनस है बीच में, तो 5 into 2 is a 10b. फिर प्लस 5 into 3 is a 15. The entire thing over 0. अगले स्टेप में ये दोनों जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. 9b minus 10b is leaving b with a minus b. Minus 12 plus 15 नहीं होगा. Ouch, I'm so sorry. यहाँ पे plus 15 नहीं है, यहाँ पे minus 15 है. I want to correct myself. ये minus था, so plus and a minus has given me a minus. I'm so sorry. So minus 12 and a minus 15 gives me a minus का 27. The entire thing upon nothing. क्यों nothing? Because I've shifted my entire thing on the other side, which means I'm multiplying 0 with these two brackets. थोड़ी सी common sense होगी. When you multiply anything with a 0, all you get is a 0. You don't get anything. Next step, shift your 27 on the other side with a positive sign. Now minus b is a 27, meaning b is a minus का 27. That's it. Alright, now whoever is thinking कि हाँ ये तो teacher ने minus plus की गलती कर दी, तो मेरी जान, the teachers are human beings and all humans can make mistakes. I accept that I'm a human being. I'm not a superhuman. So yeah, I do make slight mistakes sometimes. The best part is I rectify them. I understand them and I try to work on them as much as possible. Chalo thank you so much. It was lovely teaching you all. I hope it is as lovely for you to all learn. See you in another video. Take care of yourself. Bye-bye.